Good morning, everyone. How are you this fine morning? I'm back with another video, and today we are going to discuss about academic task 1 process. So watch this video till end, and I promise if you follow each and every step that I'm telling you today will help you to score very good bands. Fine, so let's get started. Okay, so let's discuss the format of this task first. Introduce the diagram. So in this, what you have to do is you have to write the introduction. Fine, introduce the diagram. So simply you have to paraphrase the question. All right, next is give an overview of the main points. जब भी आप अपने process का overview लिखोगे, what you have to write is you have to just mention the main points that you don't have to explain the whole thing. वो हमने अपने बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करनी है. ओवरव्यू हम जब भी लिखेंगे इट हैज टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक. वी हैव टू मेंशन सम interesting and the main points of what we are observing in our task. Fine. After that, हमें क्या लिखना है? Body paragraph 1 and body paragraph 2. Give the details. The rest of the details we have to give in our body paragraph 1 and 2. Half information in the body paragraph 1 and half information in the body paragraph 2. All right, fine. Let's move. Now see how students we have to write the introduction of the task 1. Simply paraphrase the question. Task 1 जो process है, there are two types of process. That is a natural process and another one is man-made process. So जो हम पहला process की introduction देखेंगे, it is a natural process. For example, the question is, the diagram below shows the process of photosynthesis. Okay, so let's paraphrase this question. The illustration demonstrate how plants produce energy from sunlight. Students, मैं आपको एक बहुत ही important और interesting एक trick बता रही हूँ. How you can write the paraphrase the question of writing task 1 by using how. How? See, यहाँ पे how के usage से what we have done, we have paraphrased the question. The illustration demonstrate how what plants produce energy from the sunlight. Okay. Now let's see the second example. The diagram below shows how electricity is produced in a nuclear power station. The illustration below shows the process of how nuclear power plant make electricity. अब आप देखो इसकी भी पैराफ्रेजिंग में हमने हाउ यूज किया है. सो ऑलमोस्ट इन एवरी इंट्रोडक्शन ऑफ टास्क 1 यू कैन पैराफ्रेज योर क्वेश्चन बाय यूजिंग हाउ. ऑलमोस्ट ज्यादातर आप क्वेश्चंस में हाउ के यूसेज से अपना क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर सकते हो. ठीक है. सो सी डायग्राम की जगह हमने इसको पैराफ्रेज कर दिया. लाइक वी हैव यूज इलस्ट्रेशन बिलो, डेमोन्स्ट्रेट्स. Fine, you can also write depict, highlight, any word you can use. Fine. All right, इसके बाद हम चलते हैं how to write the overview. Overview जो होता है students, it is the most important paragraph because it is the one thing where examiner will judge you. आपको examiner judge करेगा how much you are capable of evaluating your task. कितने ज़्यादा आप efficient हैं पूरे टास्क को इवेलुएट करने के लिए. सो वेन एवर यू आर राइटिंग द ओवरव्यू, कीप इन माइंड दैट डोंट राइट एनी ऑफ द इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन. बी स्पेसिफिक, जस्ट हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. जो भी आपको इम्पॉर्टेंट चीजें दिख रही हैं उनको आप इसमें इन्वॉल्व करो. एंड आई प्रॉमिस यू, जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ ओवरव्यू लिखने के ऑफ द प्रोसेस, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड बैंड्स. फाइन. Okay, the first there are 6 things that you can include in the overview of your process. The first is it a man-made or a natural process? So you can highlight. आपको देख के पता चल जाएगा कि ये जैसे कि process, photosynthesis का process जो है, it is a natural process. So otherwise how electricity is produced, it is a man-made process. So आपको वैसे ही पता चल जाएगा आपका process man-made है या फिर natural process है. Then what you have to include in your overview, how many stages are there, कितनी stages हैं आपके total process में, that you can highlight.
what it is produce, actually आपका process जो है produce क्या कर रहा है. Fine. Where does it start and where does it end? कहाँ से आपका process start हो रहा है and कहाँ पे आपका process खत्म हो रहा है. You have to include this thing in your process. Fine. Then it is a cyclic or linear. This is totally optional if you want to include or you want to leave. Are there any materials added? So is there any material added in your process? That you can also highlight. Fine. So these are the 6 things that you can include in your overview. Whenever you are writing your process, you can take the screenshot of this so that whenever you are writing the overview, you can just see this slide and you can recall the things. Fine. We are done with the introduction of the process. We are done with the overview of the process. Now we will see how we have to write the body paragraphs. Okay, let's see the question. So children, this is our question. So before starting our writing task 1, जब आपका जिस दिन paper भी होगा, don't start just jump on writing. First, just see कौन कौन सी आपको चीजें डायग्राम में मेंशन है. Just evaluate your task properly. Just see the things that are already given. For example, there is a digger and what the digger is doing, digging the clay. Clay dig कर रहा है वो ground में से. After that we have a roller. Roller के ऊपर we have a metal grid. यहाँ पे एक metal grid दी हुई है and there is some stones or clay on it. Third, sand plus water is added to the stage. And after that, there you will see the 2 arrows here. One is a wire cutter, आपको wire cutter दिया हुआ है, and then is a brick दी हुई है and आपको बताया गया है या तो आप इस mixture को आप wire cutter में डाल सकते हो, then either you can put it in the mold to give a proper shape. After that जो ये bricks हैं, they will transfer to a drying oven for 24 hours to 48 hours. Then afterward the next stage is kiln, where you can see the moderate temperature and high temperature, and then there is a cooling chamber where the bricks are kept for 48 to 72 hours. Fine. And then the stage is packaging and the delivery, and you can see a big truck here. Fine. So see, आप देखो कि मैंने I think less than 20 और 20 to 30 seconds मैंने पूरा का पूरा अपना जो डायग्राम है एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है. All the words that are given in the diagram मैंने उनको अच्छे से देख लिया है. So पेपर वाले दिन आप इनको अच्छे से अंडरलाइन कर सकते हो, so you don't miss any of these words that are already given in the diagram. Okay, so let's see the question now. The diagram illustrates the process what is used to manufacture bricks for the building purposes. So यहाँ पे हमें एक process दिया हुआ है कि actually bricks कैसे manufacture होती हैं, यानी कि ईंटें कैसे manufacture होती हैं for building industry. Fine. So students, let's see the introduction. The diagram explains the way in which bricks are made for building industry. Very simple introduction. I'm going to tell you the another way of writing the introduction. The pictorial diagram भी आप लिख सकते हो. The pictorial diagram depicts how the bricks are made for building industry. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप how के साथ अपनी introduction लिख सकते हो. Fine. So मैंने आपको अभी introduction बोल के दिखाई है, how के साथ आप कैसे introduction बोल सकते हो. I'm repeating it again. If you want to write, you can write. The pictorial diagram depicts how bricks are made for building industry. Simple. Okay. So children, जैसे अभी हमने पीछे recall किया था कि overview में हमें क्या क्या चीजें देखनी है. Let's see the overview once again. Overview में हमने देखा था man-made process कौन सा है, stages कौन सी हैं, what it is produced, कहाँ से process start हो रहा है and where it is ending. So let's see. So obviously we know this is a man-made process. So what we can write? Overall, it is apparent that. Apparent का मतलब होता है clear, ये हमें दिख रहा है, ठीक है? Overall, it is apparent that it is a man-made process. There are 8 stages. You can count the stages. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. There are 8 stages in this process.
बिगिनिंग यानी कि स्टार्ट कहां से हो रहा है आपका? बिगिनिंग फ्रॉम द डिगिंग अप ऑफ द क्ले, ठीक है, टू द culminating and delivery या ending up in the delivery. Fine. So हमने अपने ओवरव्यू में क्या बता दिया कि मैन मेड प्रोसेस है, 8 स्टेजेस हैं. स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारा प्रोसेस? डिगिंग ऑफ द क्ले से. और एंड कहाँ पे हो रहा है? डिलीवरी ऑफ द ब्रिक्स. Fine. I hope introduction and overview is clear. It is very very simple. Process is very scoring. You can either get 9 band out of 9 if you follow these proper steps. Fine. Okay, let's move. Now we have body paragraphs. जब भी आपने body paragraphs लिखने हैं, you have to make only 2 body paragraphs. That is clear. Half information आप body paragraph 1 में डाल सकते हो and half body paragraph 2 में. Fine. So हर body paragraph में what you have to include is tell about the each stage in more detail. हर एक stage को आपने properly explain करना है. Say what each stage does. कि हर एक स्टेज का इंडिविजुअली क्या फंक्शन है, यू हैव टू इंक्लूड दैट. व्हाट इट प्रोड्यूस, इफ एनी मटेरियल एडेड. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे प्रोसेस में वी कैन से क्ले इज वन मटेरियल, सैंड एंड वाटर इज वन मटेरियल. फाइन. सो यू हैव टू इंक्लूड दिस ऑल्सो. डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीवियस और सब्सिक्वेंट स्टेज. एक पर्टिकुलर स्टेज का पहले वाली स्टेज और बाद वाली स्टेज के साथ क्या कनेक्शन है, you have to explain that all. Fine children, I hope यहाँ तक clear है सबको. इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है, ओवरव्यू एंड बॉडी पैराग्राफ. फाइन. Okay, now let's see the most important thing. Whenever you are writing your body paragraphs, you have to use the time connectors in your process. It is very important. अगर आप अपने बॉडी पैराग्राफ्स लिख रहे हो प्रोसेस के और टाइम कनेक्टर्स यूज नहीं कर रहे हो, सो जस्ट बी क्लियर कि आपको बैंक्स नहीं मिलने वाले हैं. फाइन. टाइम कनेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक स्टेज को दूसरी स्टेज के साथ कनेक्ट करने के लिए यू नीड टू यूज सम कनेक्टर्स. फाइन. ऑलराइट. सो लेट्स सी कौन कौन से टाइम कनेक्टर्स आप इस प्रोसेस में यूज कर सकते हो. टू बिगिन, following this, next, then, after that, before, subsequently, firstly, first of all, secondly, finally, from this, and where. Okay, you can take the screenshot of this word so that you can use whenever you are writing your own process, you can use these connectors. other than that, अगर आपको कोई और process आता है तब भी आप you can use these connectors as well, like after that, in the next stage, in the subsequent stage, in consequently. So you can use all these words. ठीक है. If you want, just comment me in my video. I'll make one video regarding this time connectors. Fine. Okay, now let's see the next line, which is use of passive voice. Very very important. जब भी आप अपना प्रोसेस लिख रहे हो, जस्ट मेक इट वेरी श्योर आपको अपना प्रोसेस जो है, मैन मेड जो प्रोसेस है, यानी कि ये आज हमारा मैन मेड प्रोसेस है, वो आपको सारा पैसिव वॉइस में लिखना है. बिकॉज यहाँ पर हम अपनी एक्टिविटीज पे फोकस कर रहे हैं, नॉट द पर्सन डूइंग इट. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा है, अ लार्ज डिगर डिग्स अप द क्ले इन द ग्राउंड. Actually, what we have to write is the clay in the ground is dug up by the digger. So basically what I am trying to say is और are के साथ आपको थर्ड फॉर्म ऑफ यूज करनी है जब भी आप अपना प्रोसेस एक्सप्लेन करोगे. फाइन. हम एक सैम्पल आंसर देखते हैं जिससे आपको मोर क्लैरिटी हो जाएगी. ओके ओके, सो दिस इज आवर सैम्पल आंसर. टू बिगिन, अब देखिए इन्होंने फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ हमने कैसे स्टार्ट किया है. टू बिगिन, द क्ले यूज्ड टू मेक द ब्रिक्स इज डग अप फ्रॉम द ग्राउंड बाय अ लार्ज डिगर. अब आप यहाँ पे पैसिव वॉइस देख सकते हो, इज डग अप, इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया हमने, इज डग अप फ्रॉम द ग्राउंड बाय द लार्ज डिगर. मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं लाइक जिनको पता ही नहीं चलता कि जब प्रोसेस करना है कौन सा टेंस लिखना है हमने. आई होप अब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कंफ्यूज नहीं होना. इज और आर के साथ आपने अपनी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है. इज डग, इज शिफ्टेड, इज ट्रांसफर्ड,
is packed, is mixed, bricks are shifted, bricks are transferred. Fine. So अब आपको कोई confusion ही नहीं है. You can write your whole process in this passive voice. Okay, let's see after the next line of this sample answer. This clay is then placed onto a metal grid which is used. अब आप देखो यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, which is used. ठीक है, to break up the clay into the smaller pieces. The roller assists in this process. Following this, time connector कौन से लगाए हैं to begin. Then following this, they are highlighted in red color. Sand and water are added. Added is a passive voice to the clay, and this mixture is turned. Is again passive voice into two different types of bricks by either placing into a mold or using a wire cutter. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको. हमने 4 स्टेजेस एक्सप्लेन कर ली हैं कि पहले क्ले को डिक किया जाता है, देन उसको प्लेस किया जाता है. द क्ले इज प्लेस्ड ऑन द रोलर या मेटल ग्रिड, जिससे it is broken into pieces. Then sand and water is mixed and the mixture is then transferred or in the mold, or it is cut, and it is cut by help of wire cutter. Okay, next these bricks are placed into an oven to dry. होने के लिए अब oven में इसको shift कर दिया जाता है for 24 hours to 48 hours. अब 24 को आप 1 to 2 days भी लिख सकते हो. Fine. In the subsequent stage, the bricks go through a heating and a cooling process. They are heated in the kiln at the moderate and then at the high temperature. Followed by time connector, by a cooling process in the chamber for 2 to 3 days. Finally, the bricks are packed and delivered to their destination. यहाँ पे एक और line add कर सकते हो. Finally, the bricks are packed and delivered by the help of trucks to their destinations. Fine. So this is the whole sample answer. You can take the screenshot if you want. यहाँ पे आप students सोचोगे कि मैंने why I have made these 3 body paragraphs is just because to tell you कि जैसे मैंने 2 3 करके सारी stages को divide कर लिया है. But जब आपका paper होएगा, you have to make only 2 body paragraphs, not more than that. Okay, 2 से ज़्यादा body paragraphs वहाँ नहीं बनाने हैं at all. ठीक है. So you can read this sample answer. Okay. All right, fine. All right, students. So we are done with our process. I hope the way I have explained you the process is very much clear to you. Fine. So students, in the paper, if you get the process and you follow all these steps that I have told you, I bang on that you will score very, very good bands. Fine. So one more thing, if you want me to make another video on natural process, to comment me so that I can make another video for you, and just to give me comments how you like the video, and so that I can make more videos for you. That will be very helpful. And do subscribe my channel so that you can get the new updates. So all right, so good luck for your preparation. Do well and work hard. Thank you.